Today's key speaker, Dr. Amrender Kumar, Principal Scientist from ICAR-INDIAN New Delhi. Dr. Himanshu, Senior Scientist with IT Cell of ICAR New Delhi. Dr. Seema, our all officers of the university. Dr. Kumar, Registrar of the University, Dr. K.D. Sharma, Dean Postgraduate Studies, Dr. Rajive, Director of Research, Dr. Balwan Singh, Director of Extension Education, Dr. Ramesh Kumar, Director of Human Resource Management, Dr. Madan Lal Khichar, Director of Student Welfare, our Deans, Dr. S.K. Pahuja, Dean College of Agriculture as well as Dean College of Agriculture Engineering and Technology, Dr. Beena Yadav, Dean College of Community Sciences, Dr. Rajesh Gira, Dean College of Basic Science and Humanities, Dr. Atul Dhingra, Institute Vice-Chancellor as well as HOD Management, Dr. M.S. Silpuria, Teaching of the University as well as HOD of maybe 1-2 departments, media advisors, and person from press and media, non-HOD, faculty members, students, non-teaching staff, and one and all people present in the August gathering. Really a pleasure moment for me that I can also learn little bit about this work of cyber security, repositories, different resources. And one thing Dr. Amrender has rightly said that now the time has come that instead of going to library, rather beside going to library, if you don't find time so that you can just easily go through all those material which you need, because nowadays anything, if somebody is asking anything in a meeting also, we generally go to the mobile and we search the thing and we can say, okay, this is the real. So, but before using anything, you must know how important it is. And that's why they are not only talking about the repository, rather they will talk about its security also, plagiarism also. And these are the two areas, because copy paste is the major thing. I was even reading newspaper in the morning. Our media person might have seen that. They have written DJU, we are conducting the program. That's again copy paste. Because generally what we see, okay, this is a news from university, whether from HAU or GJU, sometimes they don't differentiate. And it makes big mistakes. So nowadays the main thing is, because the information is flowing much faster. And when the flow is so fast, then definitely authenticity of the information, that's much more. And we, the technical institutes or the universities or the intellectual, it's our duty that whatsoever information we are just generating or transferring, that be authentic one. And in this era of IT, this is the biggest challenge for us. And that's why these different repositories, many things have been created by our you can say renowned scientists. And Dr. Amrender and Dr. Himanshu is here. They are working on it, and because exploiting the information, having the information, and what is the main role of this thing? Because when you have the data on your screen or the information on the screen, first and foremost thing is you are able to know that where we are. And in case of students, I generally tell that
if agronomy student, they generally work repeatedly on the same topic. That's the major problem. And we are wasting lot of human resource in that. So instead of doing that thing, if you have the access to the information, you can easily know. It's sometimes difficult to have the review papers. I see many review papers nowadays. This is a new trend which has emerged out. That's a very good thing. But writing a review paper by a very young scientist, there is something else. Because at least you must have the experience about that particular area. Then you can write. Then you can analyze information. And the information generated will be useful for us. So I think for that purpose, when you have the multiple sources as well as the IT use is there to use that information, that will be on the same page. And today you are going to discuss that what you need, what's the problem you are facing in using these repositories, how we can improve it further. And for that purpose, I think you must interact with the keynote speaker or our renowned speakers. Sometimes we hesitate in asking the things. If you have not used, then it's tough for you to ask any question. But if you have used, you might be knowing, okay, if we can have this feature in the particular program, that will improve the efficiency, efficacy, everything. So I think you are going to discuss about those things, and I must appreciate that we are organizing this program in collaboration with ICAR-INDIAN. We are really thankful for your valuable time also, and all sort of help which we always get from the ICR or the IRI. And it's not question of just having the projects or working together. It is a question that how we can best deliver in a particular area. And these are the areas, I think, in our universities, maybe for the faculties, maybe for the students, it have not been exploited to that extent which it deserves. So I think we must give focus on this, and capacity building programs are much more important in this. And it's again the demand of the day. Whatsoever you are, just because over here I can find maybe around 300 participants, but university we have 6,000 plus, maybe teaching, non-teaching, and students even more. So I think the information, they be able to use the information through these repositories. And further the small programs, even we have to think of. And our faculty members, generally the professors, I would request to them too. Because your responsibility is much higher compared to the young faculty. And once a person becomes professor, he says now the last has come. They generally forget, this is the biggest challenge with the system. If I have to get 6,000 to 7,000, I have a seat in front of me, below the mirror. They say, okay, 2 marks for the training, okay, over. 2 marks for the courses, okay, over. And the score is 89. And when you ask any question in the interviews, totally blank. And I am really in a very embarrassing situation in those at that time. Because you have 2 external experts over there. So kindly think beyond that. And when you have experience of 15 years as a teacher, as a researcher, as an extension scientist, definitely then you can exploit your potential. And that's going to help our students, your fellow colleagues, your juniors, and that's the system will grow. I was reading an article yesterday that nobody can be bigger than the system.
If you start thinking that, definitely the system will, there is downfall in the system, and ultimately the person will be finished of the system. But that's very important. We have to introspect ourselves. The time has come now. If we have a contribution of 18.2% in the GDP, we have to improve it further. How it can happen? It's only through the knowledge, through the skill, through the information. And such type of programs, they are going to help us in having access to the information in a quickest way. And how further we can improve it, we can strengthen the programs. For that purpose, such type of training programs are organized, so that you can directly interact with the person who's involved with that particular program. I was just reading about this e-Granth. I think Dr. Amrender has played a great role in that. And you see that all the theses, all that have, you have the resources like that. And we can even just further strengthen those programs. Accessibility. Even can we do that if I am just asking about the NRM? You might be having that type of things over there. But now the time has come that simple by one click, can we have how many theses they are on the interdisciplinary aspects? So that easily you can trace out, okay, these are the areas which are unexploited. Can we have that, okay, these are the, maybe that may be related to agroforestry. But that doesn't mean that it is only the agroforestry. What are the areas where we can focus further? And now the time has come that IT use is required in each and every discipline. And how the other departments can learn. You don't just have the information about your department. How you are going to have the synergy with the other departments. A weed scientist, he needs the help of a agriculture engineer also. He needs the sensors also. He might be needing the biosensors. So all things from where it will come, and we are hardly think about these topics. So way forward is much more important if we have a system in place where we can know that in particular these are the way forwards, where we can assign the program to our students, to our scholars. That type of thing is going to help us. And now I think with the advent of such a high IT, we can easily do that. Because ultimately, if I am going to read out that information, though reading is much more required. I never believe, okay, we are not going to library, we have no just football in the library. That's not a good thing. Reading habit is required. Because otherwise, even the phone number, you hardly know the phone number of your family members. That's very serious. And when you have that type of habit, then you can write something. What happens with us? We are writing a letter, maybe 5 words, but you are unable to spell that. So what you do? You write first word and last word. Rest of the thing you hardly write. If I have to write the P's, P-I-E-C, he knows about P and E. In between everything will be, there will be no one. And when the teacher will ask, he will just simply cross it out that your answer is no. You know, no, sir, I have written it. What is it, P-I? It is P, sir. So why that's happening? Because we don't have a habit of going to the library, writing anything, because these are some of the constraints of it. And when you have the culprits, most of the culprits,
that occurs due to this. Maybe between the students, maybe among the colleagues, because we are not in a habit of facing any issue out. And that's why when you have to resolve those issues in the real life, then we generally fail in all these sectors. So I think the use of IT, coupled with our traditional wisdom, especially the system of reading, writing is also important. We can help you, but it can't replace you. And one thing I always say, that any technology we don't have the intervention of human being, that is not good for our system. Because it will happen, then what will be the utility of a human being? And machine is a machine. It has no mind. It has the mind which you have put in the system or anywhere. It has its no common sense कहते हैं ना, वो होता नहीं है. So I think these are the areas where you are going to discuss. I must congratulate our speakers, and good data has been given that HAU has repository contains more than 2,06,000 theses for master and PhD scholar, and 17,500 bound volume of journals, 17,500 articles, 20,000 other literature. So big repository here. And if I talk about the total collection with the library, we have a collection of 2,57,050 books with our library. And 1,06,559 bound journals. Then if I talk about the thesis with HAU, library is 14,889. And the rest of the things they have written e-books, then other areas. So I think we have very good repository, and the today's training program is definitely going to help us. And the main thing, because Dr. Himanshu is here, cyber security, he is going to discuss that. That's very important nowadays. I think you will interact with the persons, and I'm reading this thing also. We have a question bank of 90 lakhs questions we have. And I was discussing with the librarian, he said that this is the key, because this time our more than 70,000 students, they just topped in this national level exams. Because this is, we have very good repository of the questions bank. So if you have that type of, please keep on adding related to your subject, whatsoever you can contribute, that is ultimately going to help our students, our teachers, our communities. With these words, I once again thank the organizers that you have given me the opportunity to interact or to say a few words with these participants. Thank you. बहुत बहुत आभार सर आपका। आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत रहा है, और आपके द्वारा कहे गए शब्दों के महत्व को हम सभी अपने जीवन में ढालने का भरसक प्रयास करते रहेंगे, और जीवन में आपके शब्दों की महत्वता को आगे भी निरंतर आत्मसात करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। मेरा अनुरोध है डॉक्टर अमरिंदर जी से कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय कुलपति बी.आर. कंबोज जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें।
मेरा निवेदन है प्रशिक्षण कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सीमा परमार से कि वे आए और धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। Good morning to all of you. It's a matter of great privilege and honor for me on behalf of Nehru Library and ICAR-INDIAN New Delhi, as well as my own, to deliver the vote of thanks. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude to the chief guest of the function and our esteemed Vice-Chancellor, Sir Professor B.R. Kamboj, for gracing the event and sharing his wisdom with us. Your insightful address has really enlightened all of us, sir. We are truly honored to have had you with us. With your approval and encouragement, we are able to organize this important event for the faculty and students of our university. Your presence is truly valued, sir. I'm deeply thankful to Dr. Amrender Kumar, PI of eGranth Project and the Krishikosh Repository, who has always been guiding light for agriculture librarians and continues to strengthen and sustain the efforts of eGranth initiatives. His dedication towards Krishikosh has benefited whole agricultural community is deeply appreciated, sir. Thank you, sir. I extend my gratitude to our university librarian, Dr. Rajive Kumar Pateria ji, for time-to-time guidance in organizing this event. I extend my gratitude to all the respected dean, directors, officers of the university for their esteemed presence, which is real added prestige to this event. A special thanks to all the resource persons and speakers of the event who have been agreed to generally share their knowledge and experience with the faculty and students of our university. I am immensely grateful to the participants who has shown their keen interest to register themselves for this present event. I also want to thank the dedicated faculty members of the university and staff of Nehru Library for their tireless effort for organizing this workshop. A big thanks to the PRO and the photographic unit to cover the inaugural function and the technical session of the workshop. Lastly, I would like to express my appreciation to everyone who has contributed directly or indirectly for the organization of this workshop. Thank you once again, and we look forward for your continued support in future also. Thank you very much. राष्ट्रगान के लिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी के लिए चाय का अरेंजमेंट किया गया है, तो जलपान के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं।
आगे अनिल जी आगे वाली ये वाली छोटे बड़ा बस ये बोलिए You are all welcome in the technical session 1. Today we have with us Dr. Amrender Kumar, who is principal scientist and looking after the whole work of Krishikosh repository, which is a very important repository. In the inaugural session already, Sir has explained the Krishikosh repository and its benefits. So we welcome Dr. Amrender Kumar ji in this session. And I request you, sir, to please give your knowledge, share your knowledge with our participants regarding the Krishikosh repository. Welcome, sir. For giving this opportunity to share my learning experience with you regarding the digital repository which we are working for the last 6 to 7 years, and we come with one product. So before going through the product and details, just I will introduce myself. I am not a man of the IT. I am basically a man of mathematics. Did my MS in PhD from ICAR-I. After that, I joined as a scientist at ICAR-I, and from 2013 onward, I am the principal scientist at the ICAR-I New Delhi. So my area of specialization is basically climatic change, modeling, and like this. But as you know, the institute, when you are working in the institute, lot of other activities also assigned to us. So in the 2013, this repository was assigned to me. You have to look into it and do your whatever you want to do with it. And there is a good thing in the IRI is that कि हमें flexibility मिली हुई है. अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो हमें बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उस प्रोडक्ट को आगे ले जाने काम करने के लिए. तो उस चीज को हमने यूटिलाइज किया एंड नाउ वी कम आउट विद द वन प्रोडक्ट व्हिच इज नोन एज द कृषिकोश एंड व्हिच इज वेरी हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स. आज के डेट में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रिपोजिटरी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर है. एंड यू नो द इंडियन NARS, NARES is the largest agriculture system in the world. उसी को हमने इसमें इंटीग्रेट किया है. So whatever the numbers of the NARS organization may be, State Agriculture University, ICAR Institute, and the other, now we are planning for the other private institute we can include in this one way, that will be the future target. So whatever the research were being done by the students, every information in terms of their complete original thesis, especially the thesis, is available in this digital repository. So before going to the digital repository, I want to
Then say something basis of this one. मैं जैसे लाइब्रेरी को ज्ञान का मंदिर कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें जब भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं या हम सीधा लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं जहां पर हमें वो इंफॉर्मेशन नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो मैं कुछ बेसिक जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो लाइब्रेरी थे, आज के डेट में जो इसको आप कहते हैं वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट इंस्टीट्यूट with respect to IRI or with respect to India only. Now you see, everyone Nalanda University का सबने नाम सुना होगा. I am talking in the ancient India, not the. So then you see, this is the Nalanda University map, and you see the place. This is. So you see this red portion. This is the central place of नालंदा, जहां पर खिलजी ने आग लगाई थी और कहा जा रहा है कि 1.5 साल एक सवा साल तक आग जलती रही, इतने सारे उसमें बुक्स थे, एंड दैट इज फुल ऑफ नॉलेज, एवरीथिंग वाज देयर. सो इट वाज, यू सी द प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज इन द सेंट्रल प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी. नाउ कम्स टू द अनदर लाइब्रेरी. आपने बीएचयू देखा होगा, आप कभी गए होंगे कि आए हैं रिसर्च वर्क प्रोजेक्ट बन के BHU, तो these people will go to the BHU. BHU का भी अगर आप सेंट्रल लाइब्रेरी, which is known as the central library, you see ये पूरा का पूरा आर्क सेट में, and you see the position of central library. It is again at the central place. Means ऐसा जगह जहां पर किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इक्वल डिस्टेंस मिले. So now you see the selection of library is so much important. हम बहुत पुरानी, ये यूनिवर्सिटी भी बहुत 100 साल 200 साल पुरानी करी. नाउ आज के डेट में हमारा बेस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में रिसर्च में करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, in terms of the technological thing, you see that this is the best institute in the India in terms of technology, which is the, from the 2014 onward, it is the top 500 university in the world. तब से आ रहा है. And now you see its position. It also lies in the central place, which is known as the late GRD Tata Library. इसके नाम पे डाला गया है. Now you see this. Now you see the IIT Delhi. IIT Delhi, see, you see the location, and now the iconic picture. आप सबने IRA को देखा होगा. IRA का इमेज भी सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है. उसी का नाम दिया हुआ आज के डेट में नेशनल लाइब्रेरी फॉर MS Swaminathan, which is the first Indian who got the Bharat Ratna in the area of agriculture. That is talking. So now you see, so everything is known as a library. So library importance क्यों रहा? मेरे हिसाब से this is the ज्ञान का मंदिर जिसे हम कहते हैं, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. और देयर कुछ स्टेटमेंट्स लोगों ने दिए हैं लाइब्रेरी के बारे में, दैट्स आई वांट टू शो टू यू. तो जो मुझे सबसे अच्छा स्टेटमेंट लाइब्रेरी से लगा, वो लगा फर्स्ट वन. जस्ट यू सी, द लाइब्रेरी बिल्ड कलेक्शंस, गुड लाइब्रेरी बिल्ड सर्विसेज, बट द ग्रेट लाइब्रेरी बिल्ड कम्युनिटीज. अगर हमारी कम्युनिटीज को हमने डेवलप कर दिया तो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड कंट्री विल बी डेवलप. आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है अबाउट द लाइब्रेरी, the only thing that you absolutely have to know is the location of library. आप फील्ड को नहीं जानते हो, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जब एंट्री करता है तो उसको ये पता होता है लाइब्रेरी कहाँ. तो नाउ सी द इम्पोर्टेंस. और क्या होता है कि भगवान भी कुछ चीजें बहुत आसानी से देता है और कुछ चीजें बहुत मुश्किल से देता है. जैसे उसने क्या किया, सबसे जरूरी चीज क्या है हमारे लिए लाइफ में? सांस. तो उसने कहा कि सबको फ्री में दे दो. ये क्या है ऊपर वाले में. उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी पानी है, तो थोड़ा एफर्ट्स. उसके बाद खाना, उससे ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा. जब ज्ञान की बात करते हैं तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बताइए इसमें लाइब्रेरी ना हो, आपको याद ही नहीं आएगा. इवन आप स्कूल की बात करिए, जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब भी वहाँ एक लाइब्रेरी नहीं होगी. जब हम कॉलेज में आए तब भी वहाँ एक लाइब्रेरी नहीं होगी. बाकी डिपार्टमेंट रहे ना रहे, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, एक लाइब्रेरी रहेगा. इसका मतलब दैट इज द ओनली थिंग्स व्हिच इज एसेंशियल इन एवरी एजुकेशन सिस्टम.
So this is the base. Now comes to now ये तो about the library. Why I am talking this one? अगर आप ICAR की बात करें तो जब नॉलेज डिस्कवरी की बात होती है और जब ब्रेनस्टॉर्म सेशन हुआ वे बैक इन NAIP ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ NAIP 2007 के आसपास की बात बताते हैं आपको, तो एक विजन आया, कैन बी डेवलप ए प्लेटफॉर्म जहां सारे यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन एक साथ मिले। ये इतना आसान नहीं था जितना आसान हम सोचते हैं, जैसे गूगल में कुछ भी डाला और आउटपुट आता है, इतना आसान नहीं है। उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो मेहनत आज मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। तो जब हम ये प्लान कर रहे थे कि पूरे रिपोजिटरी और पूरे इंफॉर्मेशन को एक साथ लाया जाए तो क्या क्या जरूरत और कहां से ये सारे इंफॉर्मेशन मिले, तो फाइनली हमने ये देखा कि देयर इज ओनली वन प्लेस विच इज नोन एज द लाइब्रेरी, जहां पर सारे इंफॉर्मेशन आते हैं और वहीं से डिसमिनेट होते हैं। तो हमने लाइब्रेरी को एज ए सेंटर बनाया एंड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमने लाइब्रेरी को कहा कि आप इसमें डायरेक्ट डालिए, देयर इज ए नो। तो हमने जो हमारा जो सिस्टम काम करता है इट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है पर कंट्रोल इज ए सेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, हमने कहा हमारे इस पूरे सिस्टम में एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हमने एक कलेक्शन बनाया एंड गिविंग ए इंडिपेंडेंट टू दैट यूनिवर्सिटी। इसमें जो कुछ करना है आपको करिए, उसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, किसी हार्डवेयर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ से 4-5 लोगों का ऑथेंटिकेट क्रिएट कराया एंड यू जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन, इट विल गो टू द सेंट्रल स्टोर दैट इज आवर ICAR repository, where is the we have the servers and the application is there and it was stored in that one. तो इसमें स्टोरेज आपको फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा उस सब के बारे में कुछ सोचना नहीं। तो इट वाज ए हमारा जो सिस्टम था दैट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट बट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस एक लेवल पे। तो सारे के सारे यूनिवर्सिटी आज के डेट में हमारे यूनिवर्सिटी में 106 इंस्टीट्यूट कनेक्टेड है जो डिग्री से रिलेटेड, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग द 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ICR, जो जिसमें IRI इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट। तो जब डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात कर रहे थे तो देखा ICR, अगर आप वर्ल्ड पे और डिजिटल इनिशिएटिव की बात करें और इंडिया में विद रिस्पेक्ट टू ICR बात करें तो हम शायद वर्ल्ड से आगे। मे बी वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी विच इज डेवलप्ड इन द यूरोपियन एंड USA, बट हमारा जो आइडिया था उनसे पहले का है। जो डिजिटल रिपोजिटरी का आइडिया सबसे पहले 2012-2 या 3 में आया, लेकिन हमारा विजन स्टार्ट हुआ था 1997। वी इम्प्लीमेंटेड स्टार्टिंग फ्रॉम द 2007 एंड जो फर्स्ट डिजिटल रिपोजिटरी वर्ल्ड में आया दैट इज इन 2002, बट वी विजुअलाइज इन 1997 only. Now this see, so our visualization aspect it was better. तो अगर आप इसकी बात करें तो ICR ने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए इस डिजिटल रिपोजिटरी, डिजिटल इंफॉर्मेशन को आपको देने के लिए। तो इस पे बात नहीं करूंगा। अब अगर आते हैं हम नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम में करें तो अगर आप सारे यूनिवर्सिटी की बात करिए तो देखिए कितना इंफॉर्मेशन रहा होगा। आपको याद होगा जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारा पॉपुलेशन कितना था, हम कितने लोगों को फीड करा पाते थे, और आज के डेट में हमारा पॉपुलेशन कितना है, हम कितने लोगों को फीड खाना देते हैं, और इसके अलावा हम बाहर भी बहुत सारा खाना बेचते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा स्कीम है जो 80 करोड़ लोगों को पहुंचता है खाने का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना प्रोड्यूस आया कहां से, इंडिया ने क्या हुआ ना, वो कैसे हुआ, उसके लिए टेक्नोलॉजी आई, प्रोसेस आए, मेथड्स आए, सब कुछ है। उसको करने के लिए 1 या 2 दिन तो नहीं लगा होगा, तो उसके पीछे क्या क्या मेहनत थी, उसको कैसे सीक्वेंस में किया गया, वो सारे सीक्वेंस आपको रिपोजिटरी में मिलेंगे। कोई भी अगर आज के डेट में रिसर्च एक्टिविटी कोई भी होती है और उसका आउटपुट आता है तो इट इज ए गवर्नमेंट का मैंडेट है। इफ यू स्पेंड ए सिंगल पेनी ऑन एनी रिसर्च फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टेट एजेंसी, उसके आउटपुट को आपको यूजर को देना होगा। दिस इज ओपन एक्सेस पॉलिसी। जैसे आज हम क्यों यहाँ पॉजिटिव में थीसिस डालते हैं किसी भी स्टूडेंट्स का, कोई भी रिसर्च, क्योंकि वो आज के डेट में कंपलसरी हो गया है, गवर्नमेंट ने नॉर्म कर दिया है ओपन एक्सेस पॉलिसी के थ्रू
कि अगर आपने कुछ भी रिसर्च किया गवर्नमेंट के पैसे से, तो उसका जो भी आउटपुट है आप पब्लिक के ओपन सोर्स में डालना पड़ेगा। दैट इज द बेसिस। उसी बेसिस को हमने यूज करके जब ये देखा इट इज ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम द 1947 एंड ऑनवर्ड्स है, कुछ चीजें उससे भी है, तो हमारे रिपोजिटरी में आपको एक थीसिस मिलेगी 1948 की डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पढ़िए उस थीसिस को। जिन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में कुछ पढ़ा होगा तो उसकी थीसिस IRI में लाइब्रेरी में है और उसको डिजिटाइज करके इस उस थीसिस को जरूर पढ़िए। कितना बढ़िया लिखा गया है उन्होंने उस चीज को, तो उनके विजन को उन्होंने जो एक्सप्लोरेट किया है। तो दिस इज माय सजेशन, यू जस्ट रीड इट। सॉरी, अगर हम किसी भी रिपोजिटरी का हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे बताया कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था 2002, इट इज यूएस लाइक MIT एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, दोनों साथ साथ है इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया था। बट ICR वाज नॉट, जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट डेवलप हुआ था इसके केस में, वी विजुअलाइज इन 1997 और दिस कॉन्सेप्ट, बट आवर प्रोडक्ट कम इन द टर्म्स ऑफ द 2007, जो हमारा ऑनलाइन हुआ था 2009 से हुआ था। और अगर आज के डेट में देखेंगे तो देयर इज अ शोध गंगा 2011 में हुआ था एंड इट वाज ए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में है, ओनली द PhD थीसिस। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने हैं उनका एक कंसोर्शियम है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनका एक कंसोर्शियम है। तो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं अभी कंपैरिजन बता रहा हूँ कि शोध गंगा में मोर देन 4 लाख थीसिस है और PhD 4.64 थीसिस है। और IRI जो कृषिकोश वाला जो रिपोजिटरी इज ओनली फॉर एग्रीकल्चर एंड दिस डील विद ऑल इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स एंड एवरी एस्पेक्ट, बट हमारे यहाँ पे जो रिलेटेड है ओनली फॉर एग्रीकल्चर, उसके आज के डेट में मोर देन 2 लाख थीसिस है इंक्लूडिंग MSc and PhD। देयर इज अ सो दीज आर द सम इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है जो इंडिया में भी काम करती है और इंटरनेशनली काम करती है। इन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट वी आर नॉट मच बेटर देन एनी यूरोपियन कंट्री और एनी यूनिवर्सिटी, वी आर एट पार विद दिस टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। तो हमने इसलिए लाइब्रेरी को चूज किया और उसको मेरे हिसाब से विच इज ए टेंपल ऑफ नॉलेज। नाउ तो वाई डिजिटल लिटरेसी, आज के डेट में डिजिटल लिटरेसी क्यों है? अगर जैसे कोरोना पीरियड में डिजिटल और IT पावर नहीं होता तो क्या होता? हम बहुत चीजें नहीं कर पाते, बट बिकॉज ऑफ दिस IT फैसिलिटी हमारी लाइफ में कुछ रुका नहीं था, हमारा एजुकेशन नहीं रुका था, घर पे ही हमारे यहाँ क्लासेस हो रही है, इंफॉर्मेशन सेल्स भी हो रहे थे बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल रिपोजिटरी। तो हमने एक एनालिसिस भी किया कि हमारा विदिन कोरोना पीरियड में हमारा डिजिटल रिपोजिटरी का क्या यूजेज था एंड आफ्टर दैट डिजिटल रिपोजिटरी और बिफोर दैट क्या रहा, तो उसमें भी एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आया दैट आई विल शेयर विद यू। तो इसका मतलब होगा कि वी वांट टू टेक ए डिजिटल इनिशिएटिव इन ए सच ए मैनर दैट एनी इंफॉर्मेशन which can be disseminated to end user within no time, or you know the information or data is the most crucial for any research। आपको आज एक रिक्वायरमेंट है, अगर आज नहीं मिला तो आप उसको पीछे कर देंगे, फिर उस पर आपका ध्यान भी हट जाएगा और उस पर आप सोचना बंद कर देंगे। लेकिन कोई न्यू आइडिया आया, जो न्यू प्रोसेस, कोई मेथड्स के बारे में सोचें, एंड इफ यू गेट द सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट वन, यू गेट द इंटरेस्टेड एंड यू कैन डू द न्यू थिंग्स ऑन दैट एस्पेक्ट। सो हमने ये कोशिश किया कि आपको सारी इंफॉर्मेशन किसी भी एरिया से रिलेटेड हो वो आपके पास इमीडिएटली पहुंचे, इसीलिए हमने डिजिटल इनिशिएटिव में दिस डिजिटल रिपोजिटरी की जरूरत पड़ी which can be provided to you 24/7 across the global, जो भी जहां भी कहीं भी आप बैठे हो। So you know this is institutional repository is not only for the one document or the research information, it may be related to any audio, video, your data, even sometimes we require data। आज के डेट में एक और
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरेस्ट कर रहा है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल फील्ड पे जो भी कोई डेटा लेते हैं, वो क्या होता है कि हमने एक्सपेरिमेंटल फील्ड पे डेटा लिया, हमने कुछ एनालिसिस किया, पब्लिकेशन किया, उसके बाद वो स्टॉप बंद हो गया। दैट वाज नेवर यूज्ड बाय एनी अदर वर्ल्ड। उसके लिए भी आज के डेट पे चल रहा है कि वो भी सारा डेटा सेंट्रलाइज रिपोजिटरी में डालना चाहिए। आपके जब सारे काम हो जाएंगे तो उस डेटा को पब्लिश करिए सो दैट अदर कैन यूटिलाइज। उस बेसिस पे भी आजकल काम चल रहा है। मे बी इन द नेक्स्ट 5 ईयर जो भी आप डेटा जनरेट करेंगे आप पेन पेंसिल पे नहीं करेंगे। यू हैव टू कलेक्ट द डेटा थ्रू ए मशीन जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जीपीएस लोकेशन पे होगा। यू विल फीड द डेटा, इट विल गो टू योर रिपोजिटरी एंड during the project period only you can access it, but after the project period anyone across your university can access it. जैसे अभी रिसर्च में उन्होंने कॉन्सेप्ट लगा रखा है कि 4 साल तक उस प्रोजेक्ट को डेटा को यूज करते हैं, देन नेक्स्ट 2 ईयर तक यूनिवर्सिटी को यूज करते हैं और उसके 2 साल बाद क्रॉस यूनिवर्स कोई भी यूज कर सकता है। तो हमने एक एनालिसिस किया था, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का एक डेटा था। हमने एक काम किया था इमेज एनालिसिस पे कि पेस्ट डिजीज डायग्नोस्टिक करना था कि हमें कैन बी आइडेंटिफाई द डिजीज बेस्ड ऑन द इमेज। तो उस पे मेरा एक काम है। तो बट वी ट्राई टू गेट द इमेजेस ऑफ टोमेटो क्रॉप, हमें कहीं नहीं मिला। तो हमने जब सर्च किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में 25,000 images of 7 disease of tomato were. Now you see, because they have the policy. अगर कुछ भी data generate करते हैं, then you put in their repository. They get the access to us. We utilize that data and we get it. अगर उस टाइप का डेटा को एक्सेसिबिलिटी इंडिया में भी मिले तो हम भी बहुत नई नई चीजें कर सकते हैं, जो खासकर जो भी न्यू रिसर्च होता है उस पर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अदर लोकेशंस के डेटा को। So that can also be. So any repository is not related to the only to content जो आपका वर्ड फाइल, पीडीएफ फाइल, उसमें ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, उसमें आपका डेटा भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे फोटो होते हैं जो कॉपीराइट होते हैं। अगर आपके यूनिवर्सिटी के हैं तो उसको आप रख सकते हैं अपने इंटरनेट पे रिपोजिटरी पे, सो दैट विद इन इंस्टीट्यूट एनीवन कैन एक्सेस। बट आप यूजिंग द डेटा आउटसाइड द इंस्टीट्यूट, यू हैव टू either you pay it or you can give a reference for that individual. So this time, so every information should be available in the digital. So ये हमारे माइंड में ये पॉइंट से चल रहा है। अब इंस्टीट्यूट में क्यों इंपॉर्टेंस होता है, डिजिटल पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंस है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या निकला हमने जब 5-6 साल का एनालिसिस किया तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि इसने बहुत से डुप्लीकेसी को खत्म किया। और मैं स्टूडेंट था IRI का, तो मेरे पास एक्सेसिव IRI लाइब्रेरी थी। तो मुझे पता चला कि IRI में ये काम होता है इस एरिया में, तो मैं उसी पे काम करता रहा। लेकिन हो सकता है वही काम दूसरी यूनिवर्सिटी में हो गया हो या हो रहा होगा, जिसको किसने पब्लिश नहीं किया होगा लेकिन उनके सेल्फ में रखा होगा, वो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हमने काम किया। तो अगर जब हमने उस अभी मैं थीसिस के डेटा को जब एनालिसिस करते हैं तो डुप्लीकेसी इज द मेजर इशू। जो पुराने थीसिस थे जब हमने उसको डिजिटाइज करा के जब हमने डिजिटल पे डाला, जब हम आज के थीसिस को विद रिस्पेक्ट टू पुराने रेशो के साथ कंपैरिजन करते हैं तो इट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। करीब 2019 में महापात्रा साहब जब डीडी जी थे तो उनका एक लेटर मुझे मिला कि उस टाइम पे डिजिटल रिपोजिटरी पे अबाउट 1 लाख थीसिस। तो उन्होंने उस रिपोजिटरी को देखा और हमें एक क्वेरी भेजा कि कैन यू टेल मी हाउ मेनी आर डुप्लीकेट थीसिस। यू विल नॉट बिलीव कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई थीसिस होता था, उसको एज इट इज प्रोसेस करके थोड़ा सब क्रॉप चेंज कर दिया या कुछ चेंज करके उस टाइप का भी काम बहुत लोग करते थे। वी मेक ए वन प्रोसेस और हमने एक एल्गोरिथम डेवलप किया एंड देन कम आउट विद द कंक्लूजन कि अगर इस टाइप का काम कोई भी थीसिस को मैचिंग कराएंगे और इसके स्टैटिस्टिक्स इसके पास हुई तो दे आर सिमिलर टाइप ऑफ, उस पे काम करके हमने अथॉरिटी को दे दिया। नाउ दैट स्टैटिस्टिक्स शुड बी रोबस्ट, वो भी हमने उनको बता दिया। मे बी इन फ्यूचर वो बता देंगे कि सबमिशन से पहले आपको नॉट ओनली प्लेगरिज्म चेक होगा, आपका आइडिया को भी चेक होगा कि आपने सेम आइडिया यूज किया कि कोई अपना आइडिया यूज किया, उसके तरह से भी काम चल रहा है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट फायदा हुआ कि
डुप्लीकेसी को ऑलमोस्ट जो 25 to 30% था उसको उसने 5 to 7% पे लिया। तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इट मे गोज टू 0, क्योंकि उसके बाद आपको प्लेगरिज्म चेकिंग भी आते हैं जिससे और भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो अब जो भी काम होता है मे बी यू डू न्यू और मे बी इट मे बी न्यू वर्क और इट मे बी न्यू इनोवेशन, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोसेस, न्यू मेथड, न्यू एल्गोरिथम यूज हो सकता है। और अगर कोई भी नया काम आएगा यू विल गेट द पेटेंट वेरी फास्ट। सो दैट इज द वन ब्यूटी। अगर बहुत से फायदा है, यूजेज होता है, लॉसेस बढ़ता है, इसका एक और फायदा होने नजर आया। आज के डेट में जितने यूनिवर्सिटीज हैं 12 यूनिवर्सिटी ने हार्ड कॉपी थीसिस लेना बंद कर दिया। तो हमने एक एनालिसिस किया था, कोई एग्रोफॉरेस्ट्री का स्टूडेंट है यहाँ? एक इक्विवेलेंस ट्री से कितने पेज A4 साइज के निकलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? एक पेड़ से कितने पेज निकलते हैं? हाइट 50 फीट और उसकी जो विड्थ है वो मान लीजिए 3 to 4 फीट हो अगर, तो उस प्लांट से कितने पेजेस ऑफ A4 साइज पेपर निकलेंगे? एक प्लांट से क्लोज टू 11,000 निकलते हैं। और पूरे अगर हम नार्थ सिस्टम में देखें कितने थीसिस सबमिट होते हैं, ऑन एवरेज हमने देखा तो इट इज ए PhD थीसिस 7,000 सबमिट होते हैं साल में। वो आपको व्यू दे सकते हैं। और एक थीसिस जो हमने एवरेज पेज है 300 पेज का होता है। तो कितने पेज यूज हुए और उसके कितने कॉपी निकालते हैं? वो 4 या 5 कॉपी निकालते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि आप एक तो कॉपी लेते हो उसको लाइब्रेरी में रखते हो, आपके पास स्पेस कम होती जा रही है, उसको मेंटेन करना, उसमें बहुत पुराना हो जाता है रखना, तो उन्होंने रखना बंद किया। तो उससे अगर मान लीजिए हमने ऑलमोस्ट 7300 डिजिटल ले लिया और हार्ड कॉपी नहीं लिए, तो 73 गुना 300 कितना हुआ? 7,300 थीसिस जमा होते हैं पूरे साल में। उसका अगर एक कॉपी हमने नहीं लिया जो 300 पेज का आता है, तो कितने पेज बच गए? उस पेज से कितने प्लांट को हमने सेव कर लिया? और उसका मैं कॉस्ट बेनिफिट करूं तो दैट इज ए प्राइसलेस प्लांट। अगर हम 10 प्लांट को भी बचा लेते हैं तो दैट वाज ए प्राइसलेस। दोनों यू सी, अगर इसको हम लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो हम कितने ट्री को बचा रहे हैं इस डिजिटल के आने से। अभी मेरा टारगेट है कि हम एक भी पेपर सिर्फ स्टूडेंट्स अपने लिए रखें, जब इंटरव्यू देने जाता है तब उसको जरूरत पड़ती है। मे बी अब फ्यूचर आएगा, कहेगा सर ये रहा लिंक, मेरा थीसिस यहाँ देख लीजिए, उसको वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सोचिए कितना आपका एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है। सो दिस इज अ वन हैंड। तो ये तो नेक्स्ट ICAR अडॉप्टेड ओपन एक्सेस पॉलिसी, जो हमने बता दिया कि आज के डेट में कोई भी अगर MSc और PhD थीसिस सबमिट होता है, it is a compulsory to put in the digital repository by the university or by the central organization. उसमें डालना मस्ट है। उसके लिए भी क्या होता है, कई बार क्वेरी आती है कि सर मेरा तो पेपर ही नहीं पब्लिश हुआ है तो मैं क्या करूं? तो उसमें हमने एक फैसिलिटी डाल दी है, एम्बार्गो पीरियड। तो ICAR इंस्टीट्यूट का एम्बार्गो पीरियड का टाइम है 1 साल। मींस आज अगर आपने थीसिस सबमिट की है, 1 साल बाद वो थीसिस एक्सेस व्यू होगी, बाकी डेटा दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आपका थीसिस का टाइटल दिखेगा, हु इज योर चेयरमैन दिखेगा, उसका एब्स्ट्रैक्ट दिखेगा, बस पूरी थीसिस नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होगा, मिडनाइट ऑफ दैट नेक्स्ट ईयर, इट इज एक्सेसिबल टू अक्रॉस द ग्लोब। तो वो एम्बार्गो पीरियड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग है। So this is the policy, that's the reason this was created. अब ये डिजिटल कंपोजिटी कैसे काम करता है, तो बिकॉज इट इज ए टेक्निकल एस्पेक्ट, सो आई विल नॉट कवर, एंड एज द टाइम इज आल्सो लिमिटेड, सो आई विल नॉट कवर दिस थिंग। सो आई विल डायरेक्टली कम टू द माय सम डेटा। अगर आप जस्ट यू सी, जब हमने इसमें डेटा अपलोड करने के प्रोसेस किया, तो जस्ट यू सी पीरियड फ्रॉम द अप्रैल जुलाई 18 to 20 के बीच में देखिए, on
monthly means on quarterly basis more than 6,000 thesis was uploaded by the various university. इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ. मैथमेटिक्स में एक रूल है, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, सबने जानते होंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर आपने सुना होगा. इसका क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो मान लीजिए मैं हूँ IRA, तो मैंने अपना नाम B रखा, HAU है जिसका नाम A रखा. तो मैंने कहा कि ठीक है दोनों काम करो. तो मैंने अलग काम किया, HAU ने अलग काम किया, तो A प्लस बी होगा. मैंने कहा आप दोनों डबल काम करो और इंडिपेंडेंटली काम करो. तो क्या मुझे मिलेगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मिलेगा ना. अब मैंने कहा ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर काम करें. तो अब मुझे क्या मिलेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर मिलेगा. तो क्या मुझे मिलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये तो 2ab है, वो ये है. ये अलग काम करते थे, मैं अलग काम करता था भाई, मुझे हम अपने. लेकिन जब हम दोनों मिले तो हमने सारे यूनिवर्सिटी को मिलाया ऐसे ही, तो हमें प्लस 2ab एक्स्ट्रा मिला. तो इसका मतलब हुआ कि जब हम, याद होगा जब आप बच्चे रहते हैं, मैं भी बच्चा था तो स्कूल बताते थे कि अगर एक लकड़ी लो और सिग्नल वाली और तोड़ो तो टूट जाती है. यूनिटी में कितना ताकत होती है उसका एग्जाम्पल सबको बताया होगा, बताया है ना. एक छोटी सी स्टिक लो, तोड़ दो, टूट जाती है. लेकिन 5 स्टिक को तोड़ो तो टूटता है. तो इसका मतलब यूनिटी में पावर होती है. उसको मैथमेटिक्स में सिंपल वे में कहा जाता है. अगर यूनिटी करना है काम करने के लिए तो आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. इससे आपको प्लस 2ab एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपका ठीक है एडिशनल काम मिलेगा. हमने यही काम किया. हमने कहा कि ठीक है हम एक लेवल है, हम आपको स्ट्रक्चर देंगे लेकिन आप मिलके करिए हमारे साथ और आपको ये काम करना है. उसका फायदा क्या हुआ अभी आप देखिए. on monthly basis, quarterly basis, more than 6,000 theses was submitted by various universities. जितने उनके बैकलॉग थे हमने कहा सारे थीसिस आप सबमिट करिए, हम उसको आपको फैसिलिटी दे रहे हैं. और यू सी दिस स्टेज, इसमें करीब करीब 1.5 ऑलमोस्ट 1 लाख थीसिस अपलोड इस पीरियड में. उसके बाद क्या हुआ, हर एक यूनिवर्सिटी में जितने थीसिस आते हैं उतने ही अपलोड होंगे ना. इसके बाद देखिए ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया. अब आप देखिए जून में कोरोना पीरियड में फिर ठीक आया, देन ऑलमोस्ट सैचुरेशन वाज देयर, क्योंकि जिसको जितना आता था क्योंकि पुराने बैकलॉग सारे खत्म करवा दिए. तो now you see the data. अब मैं इसका डेटा देखता हूं तो करेंटली वी हैव 106 इंस्टीट्यूट और उसका अगर यूजर्स स्टैटिस्टिक देखें इट वाज ए मोर देन 32 million hits are there. Means 3,50,00,000 hit है इस रिपोजिटरी, which is the largest in whole ICR system. कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है जो डेली बेसिस पे ऑन डेली बेसिस more than 25,000 theses was viewed by the students, faculty, students. तो हमने वो भी एनालिसिस किया कि कौन सबसे ज्यादा देखता है, उसका भी आपको डेटा दिखाया. एंड यू सी द कंट्री. तो मुझे एक आया कि यूएसए और चाइना क्यों हमारे रिपोजिटरी को देखेंगे. इंडिया तो ठीक है, हमारे यहाँ के लोग देखते हैं. जो सेकंड नंबर पे हमारे रिपोजिटरी को जो यूज करते हैं दे आर द यूएसए एंड थर्ड इज द चाइना. तब हमें लगा कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. वो क्या करते हैं, ये एडवांटेज जो हम नहीं यूटिलाइज करता है उन्होंने यूटिलाइज किया. फिर हमने ये फीडबैक दिया तो लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया. यूएसए हर एक थीसिस में जितने भी आईसीआर में और एसयू में थीसिस होती हैं वो लोकल स्पेसिफिक थीसिस आती है. वो आपके उस एरिया की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है. वो उस प्रॉब्लम को लेकर उस पर रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट बनाते हैं. मीन्स हर एक रिसर्च पे जो हमें काम करना चाहिए था हमारे काम को वो कर देते, जो अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से. अगर हमारे प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट से टेस्ट करके बताया, वो किसी प्रोडक्ट हमारे नाम पे होनी चाहिए. उससे शुरू में तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमारे लोग भी
उस एरिया में पेटेंट प्रोसेस फाइल करने लगे। तो उसका असर ये हुआ है कि आज के डेट में आईसीआर में ऑल ऑन एवरी यूनिवर्सिटी में हर एक साल 5 से 7 पेटेंट मिल रहे होंगे। आपकी यूनिवर्सिटी को मिल रहा है, आईआरए को ऑन एवरेज 10 से 12 पेटेंट साल में मिलते हैं, जो पिछले साल नहीं मिलता था। पिछले 10-15 साल की बात करें तो 2 साल 1 साल में एक पेटेंट मिलता था, लेकिन आज के डेट में एक साल में 10 से 12 पेटेंट मिलते हैं। Because they have the data, they have the problem, they have the solution, so they come with the product, get the solution, उनको पेटेंट मिल जाता है। So ये बहुत ही बढ़िया डेटा उस पॉइंट व्यू से था। So these are the theses available in the repository। तो इसमें एक एनालिसिस हमने और किया था कि कौन देखता है। तो सबसे ज्यादा देखने वाले हमें जो एज ग्रुप थे वो हमने कैसे लिया। हमने आप जब भी मोबाइल ऑन करते हैं तो आपका जीमेल आइडेंटिफाई होता है, वही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी का या रिपोजिटरी तो नहीं दिखता। तो हमने इसको गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट किया, और जो आपका जीमेल है उसमें आप नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, या आपका बर्थ ऑफ ईयर डालते हैं या डेट डालते हैं। कई लोग होते हैं तो कुछ नहीं डालते हैं। वो डेटा को हमने यूटिलाइज किया कि आपने जब एक्सेस किया तो आपकी उम्र कितनी थी, किसकी उम्र कितनी थी, किस किस ने जो डेटा देखा। तो इसमें आया जो सबसे ज्यादा एक्सेस 65% लोगों ने देखा वो एज ग्रुप है 22 से 27 साल। तो 22 से 27 साल हम ये मानते हैं कि दे आर पीएचडी और एमएससी स्टूडेंट, क्योंकि 20 साल 21 साल तक तो ग्रेजुएशन नहीं होता है। उसके बाद तो 22 से 27 65% आर यूजर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 22 to 27, क्योंकि वो डेटा हम इंडिविजुअली नहीं कलेक्ट करते थे, तो हमने गूगल एनालिटिक्स को अपने इस सिस्टम में इंटीग्रेट किया। अब एक डेटा ये देखिए जो हमारे रिपोजिटरी का है। तो आपका कितने देर का टाइम हुआ है? आई विल कंप्लीट इट, डेमो देंगे उसके बाद पता चलेगा। So just you see, I have the data for a year wise available in the document, so I started with the 8081। जो 8081 में जो पूरे आईसीआर नार सिस्टम में किसी सबमिट जो डिलीवर होते थे 1304 क्लोज टू 1500 के आसपास। आज के डेट में विच इज डेटा फॉर द 2023 में जो केसेस एक्सेप्ट हुए हैं विच इज क्लोज टू 8। एक पार्लियामेंट क्वेश्चन आया था कि एजुकेशन पे आईसीआर का क्या आउटपुट है। हमने सिर्फ यही डेटा भेज दिया था कि रिजर्विस 1980 और इसके बीच में अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारे स्टूडेंट रिसर्च जो हुए हैं 6-7 टाइम्स ज्यादा हुए, जबकि हमें जो फंड मिला है वो 7 टाइम्स नहीं मिला। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एग्रीकल्चर में रिसर्च में जो फंड मिला है दैट वाज नॉट इनहेंस्ड बाय द 7 टाइम्स, बट द रिसर्च स्टूडेंट्स रिसर्च जो हुआ दैट इज इनहेंस्ड बाय, एंड दिस इज द डेटा व्हिच इज अवेलेबल इन द ओपन सोर्स। अभी ना जरा कृषिकोश, तो मैं आपको थोड़ा सा कृषिकोश का डायरेक्ट लाइव दिखा देते हैं। खुला हुआ इसको ओके कर देते, ओके कर देते। आपको ये नंबर दिख रहा होगा, दिस इज ए 284134। इसके अंदर प्लस 50,000 ऐड करके देयर आर सम बुक्स, 50,000 बुक्स हैं जो हमने उसको हाइड कर रखा है फॉर सम रीजन। ऑलमोस्ट क्लोज टू 3.5 टोटल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल इन दिस डिजिटल रिपॉजिटरी। अब जरा इस प्लस पे सेट और ऊपर कर दीजिए। नाउ यू सी आज के डेट में अगर आप, क्योंकि इट इज ए रियल टाइम डेटा, अगर आप 5 मिनट बाद देखेंगे वो नंबर चेंज हो जाएगा। तो कहीं से भी कोई भी डेटा अगर सबमिट किया होगा तो नंबर विल बी इंक्रीज। सो दीज आर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द डेटा। अब आपका जैसे ये देखिए, इसमें आपको एमएससी कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर 1,22,762 और पीएचडी 43,000। पीएचडी के टोटल केसेस 43,000। आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी बताइए जहां पर आपको एक साथ
43,000 MS PhD डिग्री, 1,22,000 क्लोज टू 2,06,000 थीसिस, बाकी सबको मिला दीजिए तो मिले, कोई भी मिलेगी आपको। आपके HAU में आज के डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ थीसिस इज 14,000 MSc PhD सब मिला के। Now you see, you go for the MBBSc, MTech, MBA, like anything you see, this number will be available in this format only. अब आप उसमें इसको हटा दीजिए, इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट। नाउ मान लीजिए मैं हूँ स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर का, आप मान लीजिए प्लांट जेनेटिक्स के, तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सोशल साइंस, यू आर नॉट मे बी इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, तो आप किस में इंटरेस्टेड होंगे? अपने सब्जेक्ट में। तो यहाँ हमने सब्जेक्ट वाइज भी डाला है, लाइक यू जस्ट सी दिस सब्जेक्ट वाइज। एग्रोनॉमी, अगर कोई स्टूडेंट्स एग्रोनॉमी का, तो एग्रोनॉमी की ही सिर्फ थीसिस 16,000 थीसिस आपके सामने होगी, तो यू कैन सी। और इसमें हमने फिर यू सी द प्लांट पैथोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का किसी ने प्लांट जेनेटिक एंड रिसोर्स लिखा हुआ है, किसी ने जेनेटिक्स का सब्जेक्ट डाला हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी ने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग लिखा हुआ है, किसी ने ब्रीडिंग एंड प्लांट जेनेटिक्स लिखा। तो हमने जो यूनिवर्सिटी ने दिया है सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट को हमने ऐड किया, हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि वो डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी कोई वेरीफाई करता है, तो यहाँ से वेरीफाई कर सकता है कि वो डिग्री का नाम क्या है। तो इसके आप देख रहे होंगे कुछ चीजें नजर कॉमन आ जाती है, जैसे एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी, कोई एंटोमोलॉजी का देता है, कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बट इफ यू सी दिस नंबर, तो सब्जेक्ट वाइज यू कैन ऑल्सो सर्च, बाय नेम वाइज ऑल्सो यू कैन सर्च, नेम आप अपना नाम से भी सर्च कर सकते हैं इसमें। सो एंड इट इज ए रियल टाइम मॉनिटरिंग, आप एट ए होल सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं, एट ए कम्युनिटी लेवल में सब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को ही देखना चाह रहे हैं, तो जैसे आनंद यूनिवर्सिटी क्लिक कर दीजिए। अब आपको सिर्फ आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ऐसे अगर आप HAU पर करेंगे तो सिर्फ HAU पे आपको एक्सेस होगी। तो इसका मतलब है कि हमने इसमें अब आइए नीचे आते हैं, तो जस्ट यू सी द थीसिस टाइप। अब आपको आनंद में MSc के PhD के सारे थीसिस आपके लिस्ट के साथ हैं, तो यू कैन सर्च बाय द लोकेशन स्पेसिफिक, यू कैन कम्युनिटी स्पेसिफिक, इंस्टीट्यूट लेवल बेस्ट, एंड यू कम विद द सॉल्यूशन। अभी सर ने जो बताया कि मल्टी प्रॉब्लम, मल्टी लोकेशन प्रॉब्लम और मल्टी डिसिप्लिनरी वेज प्रॉब्लम थे, उसको भी हम यहाँ टैकल कर रहे हैं, वो अभी आपको आगे बताएंगे। दैट इज ऑल्सो यू कैन पुट इन द टैब, लेकिन जेनेटिक्स, लाइक वो जेनेटिक्स का है और दैट इज रिलेटेड टू द एनी सब्जेक्ट, प्लांट प्रोटेक्शन ग्रुप से आप उन दोनों को भी क्लब करके आप इस पे सर्च कर सकते हैं, तो यू विल गेट बोथ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसको डाउन करिए, पीपीटी कर। अब मैं इसको खत्म करने क्योंकि टाइम इज रिस्ट्रिक्टेड, सो वन थिंग आई जस्ट आई वांट टू टेल यू, जस्ट नीचे आइए, जस्ट नेक्स्ट इसको छोड़ देते हैं। हम आज के डेट में इसका नॉलेज सेक्शन कर रहे हैं कि आपको सीधा अब ये प्रॉब्लम बताएं कि अगर आप सब्जेक्ट बता दें, अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट बताएंगे, तो आपको एरिया ऑफ फील्ड मिल जाएगा कि किस पे आपको फ्यूचर रिसर्च करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी जो सैचुरेटेड लेवल पे आ चुके हैं, जो टाइम सीरीज प्रोजेक्शन से या टेक्नोलॉजी फोर्स साइड से सैचुरेटेड हो चुके हैं, उसको स्टॉप करके आप न्यू आइडिया पे काम कर सकते हैं, उस पे हमारा काम। ये चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई विल आफ्टर दैट आई विल स्टॉप इट हियर। हमें करीब 1 साल पहले एक इंफॉर्मेशन आई PMO ऑफिस थ्रू DDG एजुकेशन कि हमें ये बताइए कि ICAR जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है, जितने प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है उस पर क्या काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक लिस्ट भेजा प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी का, जिसमें क्लाइमेट चेंज, रिमोट सेंसिंग, सॉइल हेल्थ, वाटर क्वालिटी। अब उन्होंने हमसे पूछा बताइए किसने काम किया है और कब कब काम किया है। अब पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे लास्ट सिस्टम में क्लाइमेटिक चेंज पे किसने काम किया है रिलेटेड टू स्टूडेंट वर्क, और किस यूनिवर्सिटी ने, और उसका नाम बताइए। ये क्या पॉसिबल था देना? व्हाट इज माय प्रॉब्लम? उन्होंने पूछा कि पर्टिकुलर क्लाइमेटिक चेंज पे किस यूनिवर्सिटी के किस स्टूडेंट ने किसके अंडर में गाइड में काम किया है और किस ईयर में क्या काम किया, उसका क्या काम है। और पूरे इंडिया के आपके जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और ऐसे ICAR के इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका सारा डिटेल। कैन यू थिंक वी कैन गेट दिस टाइप ऑफ डेटा? आप सोच सकते हैं डेटा मिल सकता है?
बताइए, I don't know, but because of this available in this digital repository, it takes only half an hour to get all this data. इससे फायदा क्या हुआ कि किस यूनिवर्सिटी में उसके स्टूडेंट का क्या नाम है, उसके चेयरमैन का क्या नाम है, किस ईयर में काम किया है और उस थीसिस कहाँ अवेलेबल है, सारे इंफॉर्मेशन। जैसे नेक्स्ट स्लाइड आया, ऊपर करिए स्लाइड ऊपर और ऊपर करिए। हाँ, आप जस्ट इस पे क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। क्रोम खोल दीजिए। अब इसमें क्लाइमेट चेंज डाल दीजिए, क्लाइमेट चेंज अवेलेबल, क्लाइमेट स्मॉल कर दीजिए सर, चेंज, क्लिक टू गेट। Now you see, आज के डेट में 315 डॉक्यूमेंट है क्लाइमेटिक चेंज जो रिसर्च से मिले थे। अब उसके डाउनलोड में कर अब आप देखिए, इसको थोड़ा नाम सब आगे करोगे। ये फायदा क्या होता है, विद इन ए स्पैन ऑफ टाइम यू विल गेट द रियल टाइम डेटा। अब आप जितने भी डॉक्यूमेंट इसके अंदर थे, विच इज रिलेटेड टू द टाइटल, मान लीजिए किसी के टाइटल में क्लाइमेट चेंज है तो क्लाइमेट चेंज में ही काम किया होगा ना, हम दिस एजम्पशन करते हैं। तो हमारे पास सारे इंफॉर्मेशन अब आगे, अब दिखा दें शुरू से पहले नंबर शुरू यहाँ पे। अब जैसे ये देखिए, ये ईयर हो गया, यहाँ पहले पे डालिए नंबर, नहीं बस इसका, ये स्टूडेंट्स का नाम आ गया, उसके बाद उसका किस यूनिवर्सिटी में किया है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और एमएससी में काम किया है, और उसका थीसिस कहां पर है, थोड़ा कर्सर बढ़ाओ, उससे कर्सर बढ़ाओ, एक कर्सर से बढ़ा, कर्सर से बढ़ाओ, हाँ एक कर्सर आगे बढ़ो, 3 पॉइंट एमएससी और आगे जब शुरू से आ जाता है, और उसके थीसिस का जो अवेलेबल टाइटल ये है, This you see, perception and adoption strategy of Punjab Pedagogy towards climate change. So it is a climate change research work. एक और आना, हाँ ये D plan. D. This is the location where your thesis is available. अब चाहे PMO देखे, कोई भी देखे, अगर आपको और डिटेल करना है सीधा thesis पे जाइए और आपका एक्सेस करेंगे। So when you see, because this data is available, we can utilize it through a metadata. तो कोई भी इंफॉर्मेशन विदिन ए स्पैन में जो लगता है कि हम अभी नहीं दे सकते, जो मे भी इसको अगर हम हर एक यूनिवर्सिटी को भेजते सब पैकिंग करते या लेके करेक्ट करते, इट टेक एटलीस्ट 6 मंथ, जो हमने हाफ एन आवर में, बिकॉज हमारे पास डेटा अवेलेबल था। नाउ यू सी द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बाय द, आप इस लिंक पे आप भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर टॉपिक पे सर्च करना है, सिर्फ वही थीसिस आएंगे, वो इतना ही डिटेल पूछना है। एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर टाइटल सर्च करिए एंड यू कैन गो दैट थीसिस व्हिच इज ऑलरेडी हियर गिवन टू द स्टूडेंट्स दिस लिंक के लिए। सो आप प्रेजेंटेशन में आइए। So these are the different products. Yes, so this I will stop it here, and thank you very much for hearing my lecture patiently. And so I will be grateful to the organizer who gave this opportunity. Now my one request, you have gone through, I will also request to please go in detail of this digital repository, and if you feel any problems or you want something added, my email ID is akjha@iri.res.in. Maybe अगर आपके जो ऑर्गेनाइजर है वो आपको मेरा मेल दे देंगे। You can mail to me. We will try to accommodate your problem if it is existing. और अगर कुछ पॉजिटिव चीज भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा नेगेटिव लिखेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़। कभी कुछ पॉजिटिव भी अगर आपको लगा तो यू कैन राइट टू मी। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद सर, जो आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को कृषिकोश के बारे में जानकारी दी। अब मैं डॉक्टर हिमांशु को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं ICAR इंडियन से। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देंगे।
Yeah, thank you so much, Dr. Amrender. And also I thank the university for giving me this opportunity to speak on this very important topic of cyber threats and challenges. As in this session, we have seen how diligently such an important project has been carried out, and the output is such an immense output with such an important repository, which is being accessed throughout the world by students and researchers. Similarly, Government of India has also rolled out many other digital programs for the citizens of our country under the Digital India program, and we know Prime Minister lays very high importance to this digital initiative because of its inherent benefits of transparency as well as convenience to citizens. As we have understood during COVID program, how we could carry out so many activities, important activities, without going out through online platforms which were available through the Digital India program of Government of India. So the most important thing when we want to roll out digital services is the cyberspace or the digital space of the country. And if we have to provide, our government has to provide services through digital space, then most important thing is the cyber security. Because if we don't ensure security of the cyber world, we cannot provide unrestricted access to those digital programs or digital services. The Government of India understands that, and they have started and rolled out a very important initiative of securing the digital space of India. And it is so important that cyber security of digital space is almost considered equivalent to sovereignty of India. So if somebody breaches or tries to undermine the cyberspace, it is equivalent to undermining the sovereignty of the country. So to begin with, we will just go through some definitions, because I will use some terms throughout this presentation, and we must have an agreement on that definition or understanding of those terms. So security, as I am speaking about security, the security dictionary meaning of security is basically freedom from anxiety, and it's a Latin word. It got incorporated in dictionary in 16th century. Similarly, I will talk about assets, digital assets or assets. So any asset is anything that has some value. Then vulnerability, I will be using this term vulnerability. Vulnerability is basically how somebody can exploit a resource. So that becomes vulnerability. And then threat. I will be frequently using the word threat. So threat is basically the circumstances in which a resource can be exploited. So and then we must have understanding of what consists the cyberspace. So any internet connected device, hardware, software, etc. used for facilitating exchange of digital information will constitute a cyberspace. It is not just a computer or mobile device, basically even the network devices which enable or facilitate the exchange of data information also constitute the cyberspace. So it includes computers, laptops, smartphones, routers, firewall, IoT devices, software installed on these devices, they all constitute the cyberspace. And if we see the threat landscape of the cyber, so we can see malware attacks constitute something like 28%, software failure 12%, hardware failure 24%, disasters, natural disasters 1%, and human error is 35%. So these are the two things in which if we have intervention, we can considerably reduce
the losses to digital information or the compromises. So how we can achieve this? Basically, this malware attacks can be reduced by cyber security preparedness of any organization, and human error can be reduced by awareness of the cyber security principles. So these are the two very important things we will take care. So almost we can take care of 60 or 65%. And you will appreciate during last 1 year, India has incurred losses to the tune of almost 8.4 billion US dollars due to cybercrime, which is almost 75% of entire fund raised by startups in 1 year in India. You just see the loss of revenue that is taking place due to cyber security and cybercrime. So it becomes our duty to become prepared by being aware of cyber security and develop systems which are not vulnerable to these threats and attacks. So when do we say that cyber security has been breached? We have a classical theory of CIA triad where C stands for confidentiality, I for integrity, and A is availability of information or data or any resource or service. So if these three things are, any of these three things are compromised, we say cyber security has been compromised. So examples include man in the middle attack. So here what happens, one person will get embedded within server and the receiver of information or service, and then he will change those data packets. So basically the data or service that the user is getting is not originally what was intended, but it is altered or changed. Similarly, in case of availability, denial of service attack takes place, distributed denial of service attack takes place, and those services are not available. So we say that security has been breached. What is the basic? The motives basically more or less fall into these categories. Exfiltration of data. We say data is new oil. It drives the economy. So many people are behind the data. The threat actors being Korea, Pakistan, and China, Russia. Then network disruption. Government is building cyberspace, but if hackers are able to disrupt those services, it undermines the basically preparedness of any country and brings bad name to them in this political, socio-political situation. So that is also one motive. And even adversaries are sometimes competitors within the country, and they try to bring down their competitors. And then money cycling is again another objective. So these are the recurring themes in cyber incidents. These cyber crimes are basically carried out by using these methods predominantly. If you see, phishing emails constitute almost starting point for 50 to 60% of the cyber crime. So every cyber crime will begin with a phishing email. Whenever we open our mailbox in the morning, we see 2 or 3 some messages which are basically genuine, and 10 to 15 messages which are not, we are not anticipating, we are not expecting. So those are useless, but they take a lot of our time to understand that they are not useful to us, and then they occupy space, lot of space. They take up lot of bandwidth. But actually, almost 80% of the crimes begin with a phishing email. You receive an email from an unsolicited person whom you don't know, you are not expecting email from it, but it will ask you to click on any link, they will ask you to download a software, they will ask you to fill a form, tell some information, basically through social engineering techniques, and you tend to divulge some information or your related to your account or your personally identifiable information, then you become vulnerable. So if we are able to identify phishing email from a genuine email
and in fact we in the first instance delete that email and don't do what it is intended, it is intending us to do. We can be sure that we can get rid of 80% of the cybercrime. So this is, we should develop a knack of identifying phishing emails from genuine emails, and if we do that over the time, we can secure ourselves. Then there are vulnerable websites. Hackers try to identify what are the vulnerabilities in websites, and they try to bring them down so that you don't get benefits of those websites. Then honey trapping, generally it happens with people who are high profile, people like people in defense, people working on very important projects of high importance. And then misuse of NIC accounts is also has been reported because a lot of communication within government of India happens through NIC email accounts. So if you are able to compromise those accounts, you get a lot of critical information. And it has happened during COVID. A lot of email addresses were compromised through various means. The other types of cyber threats which are lurking large are malware. Malware is basically a piece of code that has been written with a bad intention. It is just like any other program, but its intention is not correct. Man in the middle attack, as I told you, denial of service attack. So they bombard the servers with so much huge amount of traffic at the given point of time that that service becomes unavailable. It is not able to handle those many requests at that given time because it is not configured to handle that so many requests. So ultimate objective is defeated. That service becomes unavailable at critical time. Like you are looking for your exam results. Whenever competitive exam results are announced, then those services become unavailable. So it raises anxiety of the people and brings bad name to the organization which is publishing results. Then zero-day exploits, another very important type of vulnerability which the criminals, cyber criminals exploit to their advantage. Zero-day exploit is basically whenever hardware or software is published or brought in the market, it has some inherent vulnerability which get discovered over a period of time when it is used, and those get reported to some databases online. But there are no solutions available for them. So perpetrators are basically one step ahead. They try to exploit those vulnerabilities which are present in those systems, but for which there is no workaround so far. And then advanced persistent threats, APTs, they are basically called advanced because they utilize a lot of very advanced techniques. Even they things like artificial intelligence, and they are persistent because they take almost very long period of time to carry out. From 6 months to 1 year to even 5 years, they prepare to carry out these kind of attacks, and when they execute them, it brings a lot of bad name to a country or losses to entire sector like power sector, which is very critical, nuclear sector, space sector, transport sector. So whole of that get crippled, and generally the losses are irrecoverable. So there are many countries which harbor cyber armies. It is as part of their policy. And then they carry out advanced persistent threats against their adversary countries, like China uses this technique very efficiently. Even they carry out cyber war is a technique for them. Even during Russia and Ukraine war, you must have heard that even before the physical war happened, cyber war had started. And Ukraine and Russia both suffered a lot of losses and loss of reputation. Ransomware, here they over a period of time some softwares get installed in your PCs in network servers, and they keep on encrypting the data and software and services. And after the encryption is complete, then the demand is sent to that only after you pay so much amount that they will provide you key to decrypt this data and service. And basically that amount is asked in nowadays in bitcoins, because by very nature of it, bitcoins cannot be traced, like who is asking for that money and how it is getting utilized. So basically it becomes very difficult to recover that money.
So we have to build systems and organizations where we take care of cyber security vulnerabilities. We have to be very prepared so that we because we know such kind of attacks are taking place, we have to be prepared for this kind of attack. And then DNS attack is another very important piece. So in our personal lives also we must have come across, there are 10 common scams which have been identified by Ministry of Electronics which are taking place nowadays. So scammers target people basically of all ages, but it has been found that middle-aged and elderly individuals are particularly more vulnerable to these crimes. And I can tell you, awareness is the only deterrent. Only if you are aware, you can be safe. Otherwise, they say that sabka number aayega. Nobody is safe. It is just a matter of time that you are in frame of mind when the scammer calls you or attacks you, and you are bound to give your money, your personal information, your personal details, credit card information. It's just a matter of time because they are very advanced. They use a lot of advanced techniques, personalized information. Phishing emails are so personalized that you tend to believe that it is a genuine email. Then they use deepfake videos, artificially prepared audio is prepared, and you tend to believe that the audio is of your family member. Even you cannot discriminate whether it is genuine or fake. And during elections, we saw that video of our Prime Minister Modi ji was being circulated with fake information. So TRAI phone scam. So fraudsters claim to be from a TRAI, and they tell you that your mobile number is linked to illegal activities and services will be immediately suspended. And if you fall victim to such kind of scam, they will ask you to they will send you some link that you send your information, update your information on this link, and then that can be exploited for carrying out further fraud. But the reality is, generally TRAI never suspends services. It is a telecom company. Your service provider like Jio, Airtel, or Vodafone that will call you. And the second kind of common scam that is very prevalent nowadays is parcel studded customers. Maybe many of you must have received this kind of call, or your family member must have received such call that you have received some parcel and which has contraband and it has been intercepted, and then they will demand some money from you, penalty. Otherwise, they will inform to police or the relevant authorities. And it has happened in Mumbai. A doctor, basically, she got trapped and almost paid 3 to 4 crore rupees online. She ended up paying such a huge amount online. So here action is basically disconnect such these calls immediately. As and when you get a call that your parcel is you have received parcel and it is not deliverable because the address is not correct, or things like that, you just disconnect and report the number to relevant authority. Then the third, this digital arrest, this type of scam is gaining prominence because many cases have been reported. Mr. Oswal, prominent businessman, he was due just I think 2 weeks back, and he ended up paying 7 crore rupees on that. And this was a famous case of digital arrest. What is basically digital arrest is you get a call, a video call, and then you are not allowed to disconnect until you end up paying the money. And in case of Mr. Oswal, basically it happened that they said we are calling from CBI, it's a case of money laundering, and a case has been set up, virtual court has been set up, and the deepfake video had none less than CGI Chandrachud, who was adjudicating the case, and he ended up paying 7 crore rupees to just to protect his bad publicity or bad name. And many other cases are happening which even don't get reported also, but if you are aware, you can protect yourself. Here the catch is police never conduct digital arrest and online interrogations. But if you know, there was some family problem also which was happening with Mr. Oswal. I think
His daughter-in-law has been arrested in Uganda. His son has disappeared somewhere. So he was in that kind of frame of mind, and he fell victim to this kind of thing. So a lot of cases are getting reported that money laundering is happening and arrests are happening. It comes into news, so he thought that maybe I am also involved, and he ended up paying. He even did not call his own lawyers, although they may be having battery of lawyers, and he became victim of this. Then a family member arrested. This type of scam is also going on, where they will trap a family member at a place where your mobile gets jammed, and then they will make a call to your family member that your son or daughter has been arrested for some crime, and because you are a very reputed person with a very clean image, if they register a case against your son, then you will get a bad name. So it is better you pay up the money. Otherwise, they will report it. They will file a case, FIR against you. So here action is to immediately verify with your family member before taking action or before paying the money. So you immediately call that person, even if that phone number is unreachable. Don't take instantaneous decision. Don't make payments, because police never calls on phone. You must have seen they are not so IT or cyber friendly. Then five, a very important type of common scam that is taking place is get rich quick trading. Here also very senior PSU employee in I think Hyderabad, he was duped of almost 6 crore rupees. He got into this trap where they told him they approached to him on WhatsApp and told that money will be he will become rich in trading, and initially he was enrolled on some platform, he got returns, and then he invested more money, and after he had already invested something like his 2 crore rupees and his returns were almost 3 crore rupees, he tried to encash that, but he was told that you have to pay some uh, uh, income tax and excise and duty and all those things to recover that money, and he ended up paying 4 crore rupees more. But at the end it was found that it was a trick. Then easy task for big rewards. Scammers offer high sums for simple tasks. Just clicking online on some links, they say you will get some assignment, very easy assignment, and if you do it, you will get money on the online portal. And you will accumulate lot of money, and if you try to encash, they will say you can encash only if you upload something like 50,000 rupees, then they will ask 50,000 more, and you end up losing more money than you have earned. Credit card issued in your name, mistaken money transfer. This also happens very frequently, that by mistake I have transferred you 50,000 rupees, please return it. Then they initiate a transaction, and then you end up losing more than that money. Then KYC expired. Nowadays, whenever we go to bank, we visit the bank, they will tell you that your KYC has expired. Maybe it is related to debit card, credit card, bank account, and you have to submit a document. So these people contact you online. It is not in physical world. They will contact you online and make you carry out those KYC activities online, and you end up divulging your lot of personal information. Basically, for carrying out any financial crime, all these criminals need is some very few basic information: your bank account number, your password, bank name, and then the OTP. So if you by these social engineering techniques, if you give away your bank account number and password, only thing left is your KYC, your OTP, and that also they make you diverse by these social engineering techniques, and basically you will lose lot of money. Another thing is generous tax refund. During income tax return filing period of July and August, you will start receiving such emails that you have tax refund, and if you want that money, then you have to give some information which I told you: bank account number, your password, this and that. So these are 10 common scams which have been highlighted by government
cyber security agencies, and if you are aware of this, you can be sure that you can protect yourself from most of the cyber crimes at this date. Although this is a very evolving field, new scams get created by the day. So the best practice is to be aware. So what are the basics of cyber safety? How you can be safe by following some basic things. Verify information before acting. Don't be impulsive. Whosoever is asking you for some personal information, bank account related information, financial information, never give out information in a click of a button. Always take time. If somebody is asking about showing emergency, that this is such a big emergency, you have to tell information right away. Otherwise, your fortunes will be lost. Don't depend on them. Take your time. If it is very important for you, they will call you. They will access you by other means. Maybe if you have got phone call, they will call you on email. They will send a letter. They will send you telegram. It is such an important information. But never give away in first instance. Take your time. Don't click suspicious links. So what happens is whenever you are asked to give away your personal information, you will be asked to click on a link which has been sent on your WhatsApp number, email, SMS. So best practice is to never click on a link, never ever. Even if you have to access any resource, website or bank service or anything, type the URL on your own. Keep those URLs handy in a notepad. Copy them and paste in the URL and always access through those pre-recorded URLs. Never ever click on suspicious links. If you make it a habit, you can protect yourself from 90% of the cyber crime. Recently, it happened in case of a airport lounge access. This thing, a video is making rounds in YouTube that a lady was in Bangalore airport and she had some time before her flight, so she wanted to access lounge. And when she went there, she said, because I am in habit of losing the things, I am not carrying my credit card in physical, I have an image. I carry image always. So they scanned her card and then they asked her to, on her Apple mobile, asked her to download a mobile app. They said that we will carry out a face scan using this app. And basically they sent a link and she did not download from Apple Store, this service, and then there was so much hassle that she says, I didn't even access the lounge. I went to coffee shop and then she had coffee by paying, and when she came back at home, her in-laws were not well. So for the entire month she could not see phone messages and things. And when the bank statement came, she lost 67,000 rupees. So basically, when they ask you to download any app, by sending you a link, they are asking you to install an app which is basically a screen sharing app. And once you have installed it, they have access. First thing they do it is divert your calls, divert your messages to a different number. And then second thing, they have access to all OTPs because they already have a bank account number and password. Or only thing they want to know is your OTP. Once they have the screen share app installed, they have access to that also. Always confirm your transactions with bank. Whenever you receive any transaction message, go to your passbook, update, and then check it. Report suspicious calls number, make it a habit. Whenever you suspect a number, report it, because if a number gets reported by multiple numbers, then agencies tend to act on those numbers and those get caught. Because there is a central this database of a service is there, cybercrime.gov.in, where you are supposed to report cybercrime, and there are almost 7,000 crimes reported every day, which are reported, and there are so many other crimes which would get reported also. So it is not possible to investigate all those crimes, but if they come to know that through this number or this person is involved in so many crimes, then those crimes get investigated. Be cautious of high return schemes, update KYC in person, don't do it online, because deepfake videos, AI is being used so
intelligently by these scammers that we are not even aware of those techniques. Don't share personal bank details with anybody, even account number don't share. Report scams. These are some services which have been started by Government of India for the benefit of our citizens. National Consumer Helpline, Cybercrime Reporting Portal, cybercrime.gov.in. Always spend some time on this portal. There are a lot of multimedia stuff to educate people about commonly taking place cybercrimes. And if you subscribe to this CyberDost service, every day you get some kind of advisory or tip to make you aware of the cybercrime. Then visit the local police station, stay informed, stay vigilant. So this is about advanced persistent threats. As I told you, they are advanced because they use a lot of advanced techniques. They are persistent because they take a lot of time to carry out, but losses are huge. China, Pakistan, North Korea, Iran, they are active in this domain. Distribution of malware through phishing. So as I told you, phishing is basically phishing means you are being baited. Like when we do phishing through by sending manipulating you through some technique to divert some information or click on a link. So first phase in this is reconnaissance of the victim in any cybercrime. First thing is information gathering phase. So what happens during this phase, they will ask you to click on link, go to some website and give some information or install some software, malware. Malware tends to be sometimes keyloggers. So whatever key you press on keyboard, those get typed in a notepad file, and at the end of the day, they are sent across through internet to some command and control centers where they try to decipher whatever you have clicked. So if you have gone to your bank website, so you will type URL, and then after that you will type your account number and then password. So they have these three things with them. All they now need is your OTP. Selection of lucrative topics, like during COVID, people were expecting daily basis some COVID guidelines, so they will send some email saying that this is the latest update on COVID, attack on Indian embassy, etc. for advising user to click, and you become victim. So how do you identify that you have some malware attached to a file like document file or Excel file? So always enable file extension view in your file explorer. So if it is a malware, it will have a different extension. It will show that it is a docx file, but actually it will have extension like .bat, .exe and things like .aspx, which are hidden basically. So if you have this enabled, here we have this option, file name extension. Here if you see, show file name extensions in Windows Explorer, then it will show the real extension of the file. And second important thing is, if there is malware in a document file, which will get activated if you double click on that. So it is a good practice to disable macros in this Word and Excel and things like that. So there is an option here in Trust Center to disable macros. In options, basically here if you go to options and Word options, here you will see disable macros. And now I will tell you top 2 best practices which if you follow, you will protect yourself from cybercrime. Never ever access any link by clicking on a hyperlink provided on any email received by you. Always keep your most accessed websites URL typed on any notepad file, and always access through those URLs. Pay attention to the URL of the website. Always type URL because it will show as if it is a sbi.co.in, but at the back side it will take you some other server which is not hosted by sbi.co.in. And so you may be having some notion that malware or this spy, even air gap devices are also getting infection.
how through audio waves, you have speaker in your computer, and through audio waves, through power lines, malwares are getting spread. So don't be under intention that because I am not connected through internet, my device is safe. Even through pen drives, malware gets transferred. So one is, if you see, this desktop is not connected to internet, and this three devices connected to internet. You do some work, you attach pen drive to this internet connected PC, you download some data, and you take it to standalone system. So this was to become vulnerable. So how to identify pen drive has malware? It will show less number of files, but you will feel that your entire space has got consumed. You have very less free space, but actual content of the file will be very, that pen drive will be very less. So what you can do is show hidden files enabled in your pen drive. So then it will show hidden files, and you will see that lot of data has been copied from your PC. Important data has been copied, or which will be transmitted to some command and control center. So here you will see we have a 4 GB pen drive. Hidden folder will have 150 MB and other files like this. So it actually reveals a lot of information if you enable hidden files in your pen drive. So to sum up, with USB pen devices, pen drives always enable show hidden file and folder, disable auto run and autoplay feature, because cyber criminals exploit this feature of the pen drive. Auto run is basically a file which, as soon as you connect the device, it gets executed automatically. So they infect this file, and maybe once you connect it, your PC may get keylogger installed or some other malware, and ensure that there is no hidden file and folder present in the media, and make it a habit to scan these files through updated antivirus. Domain-based attacks, like we access emails through this domain email.gov.in, but they will host a service which will look as if it is email.gov.in, but it will be like email government.rf.gd. People see only first thing, they will believe that it's a government hosted server, and then you will divulge information about your email account name and password. Rule of 3, to protect yourself, always take backup of your data, at least on 2 different media, at least then very important data, always take backup, keep on 2 different media, and physical isolation of those copies. Government of India keeps sending security guidelines to organizations. They have started a huge elaborate program of securing digital space of countries. So it has been made mandatory to have CISOs in every organization, be it government or private, or ministries, departments, industries. It is compulsory to have a chief information security officer, and they are in touch with the security agencies are in touch with these people. They carry out training programs, workshops, tabletop exercises to identify cyber crimes and keep the systems safe and secure. As I told you, if you are able to identify a phishing email from a genuine email, you can protect 80% of the crimes from happening. So how you can identify a phishing email? It will always be coming from a free email domain like gmail.com, hotmail.com, yahoo.com. It will not be from your university server or your workplace server, and then mismatch between the from name and email domain. From name will show as if it is coming from CEO of your organization or VC or your professor, but basically at the backside it will have a hidden name. Spoof company domain names, at the front it will show as if it is sbi.co.in, but at the backside it will be sbi.co.th, like it will be maybe Thailand. Warning from your email provider, because unless they threaten you, or if the best technique of getting information is to threaten somebody. So it will be, email language will be very threatening, that you have committed crime, we have identified, you have accessed some
banned website, and immediately you get some information. If you see some threatening content in an email, you should suspect that it is a phishing email. Then request for sensitive information. They will ask you for some information which is sensitive, like bank account, personal information. Okay, so I will just go through rest of the things. So other techniques of identifying phishing email are like this. So another thing is every resource we access, security mechanism begins with username and password. So it is a good practice to keep your password safe, keep it long, and a mix of multiple types of characters like small case, uppercase, numbers, and special characters, because security begins with username and password. Then other things like keep all the application and operating system updated, check configurations. There are some online services where you can submit files and find out whether they are infected or not. And then sometimes we access information in incognito mode, and then we feel that we are safe. But actually, most secure form is through VPN. So in the paucity of time, due to paucity of time, I will just stop here. Thank you. अब मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ हमारा नेक्स्ट सेशन 2 बजे शुरू होगा, तो 4:10 के लिए आप लोगों को यहाँ पे साइटेशन मशीन, अगर आप इमेज डालोगे साइटेशन मशीन, तो उसका ट्राई बटन जो आपको ठीक है, आपको उसको यूज करना है, वो आपसे पूछेगा कि यू वांट टू गेट फ्रॉम ऑनलाइन title of the name of the author, title of the document, then words of the document, then pagination, volume, issues, everything. Then you will click on the button finish, and that will create the automatic citation. You can copy that citation and use that citation in your online. If the document is available online, you have to just type the URL, DOI, okay? That will be displayed on the screen, and that will create the citation. You can use that. Or many software which will create multiple documents in a one click, like Mandela software. Okay? So we will finish here. If you have any questions, then you can ask regarding the citations. Otherwise, I will take in the order. If you have any questions regarding my presentation, you can ask. बेटा अपनी यूनिवर्सिटी में जर्नल ऑफ इकोलॉजी को फॉलो करते हैं। साइटेशन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर हमने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा, लेकिन बहुत सारे लेक्चर्स लाइब्रेरी वाले देते हैं, जैसे मैंडले सॉफ्टवेयर पे सब देते हैं बहुत बार। विटारो है, वैसे मैंडले भी है, आप खुद भी यूज कर सकते हैं उसको। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप गाइड में आ सकते हैं, हम आपको उसका गाइड करते हैं कि कैसे साइटेशन का वन क्लिक में कर सकते हैं। लेकिन वो ऑनलाइन रिसोर्सेज की कॉन्टेक्स्ट में होता है, ठीक है। अगर प्रिंट का है तो जो साइटेशन टूल्स है वो बिग साइटेशन मशीन वो आप यूज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? अदरवाइज आई विल कंक्लूड हियर।
मैं डॉक्टर राजीव कुमार को मेरे जो कि मुख्य लाइब्रेरियन है उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि वो हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक एग्रीकल्चर साइंस के बारे में ज्ञात करें। ई-लाइब्रेरी के लिए भी पासवर्ड है समिति का केस में और रेफरेंस के उससे भी रेफरेंस का व्हाट्सएप पे आएगा। तो क्या अंदर ही करो आइए सब बताइए So I'm going to aware you about some of the e-resources accessible to our university, whether they are subscribed or provided by the some of the consortia or available in the field available in open access mode in the field of agricultural sciences. So nowadays, all you know, we have very good collection of literature in our library, but in addition to that, we have been subscribing many more resources. For example, lakhs of books in APSCO database, and these resources are accessible on the campus networks. It means it is accessible from the main campus network as well as all station networks. And we have made available this facility to every user that they can use all these type of resources from their mobile, on their mobile by downloading a HAU library app. So we will start with the HAU library. Here we will see a digital library is there. Click on digital library. In this digital library, we have listed all the resources which are accessible to our university academic and research community. First is aggregate. Aggregate is a union catalog of agricultural libraries. Means it is just like our OPAC, online public access catalog, wherein you can search the holding of our library. Means you can search the collection, NEHRU library collection or collection of the any other departmental library. But this catalog aggregate is a union catalog of more than 37 libraries. So you can search book from this catalog using simple or advanced search like other catalogs and locate just right here agriculture. Search box में library catalog. It will show you that particular book is available in this library. You can identify nearby library and consult the document from there, and you can also ask your librarian to get that book on interlibrary note for your consultation purposes. Okay, click scroll down. If you see this particular book, item available for loan in BAU support, class number is this. If you see another book, you will find item available on loan at BOU Sabir, IGKB Raipur, ISR Library, and many more non-library as well. So you can use this catalog for finding your desired book. Next. Then online catalog. The second one. It's our library catalog.
So you can search it from where our campus network on your mobile and locate you search your desired book from this catalog. Or I think most of you are using this catalog, so need not to discuss more here about it. Next one. E-books. So we are subscribing more than 2.5 lakhs books. For some of them we have perpetual access and some of them are available on an annual subscription basis. So if you click on any of the collection, publishers collection, you will find a list of titles along with their URL. First one, Agro. So here, zoom out. This is the author, this is the title, the publication year, ISBN, and this is the URL. If you want to view the full text book, just click it here. You will be able to see the full text book. Scroll it. So similarly, you can search the collection of other publishers also. Right. So we have art and science academic publication, ebooks, carry ebooks, Cambridge University Press ebooks, Wiley ebooks, Taylor and Francis, Krishikosh-Digital, Report, NPH e-learning, NEPA ebooks, ebooks from Astral, APSCO books. APSCO books, it contains more than 2.4 lakh books in it, on different disciplines, not only agriculture. Then NPH learning ebooks. So you can search your books from here, and these are accessible to all, not limited to this campus only. And next one, faculty. Then SERA. SERA is a platform, or you can it is a service which provides access to nearly 3,000 full text journals, and these journals are subscribed by the Education Division ICR, and access has been provided by them to all state agriculture universities and ICR institutes. You can search the journal article along with this. Here you will also find some other resources like India Stats, share subscribed elsewhere ebooks, and query for academic writing. It is no more available, I think. ये इन्होंने ट्रायल एक्सेस दिया हुआ था हमें कुछ दिन के लिए. India State is there, and you can search journal finder. You click on journal finder. Here you will find the alphabetical list of journals. Otherwise, you can also search the journal and see the full text journals. Click on server. Here you will find three types of journals. Number one, which are subscribed by the SERA. Number two, peer-reviewed journals available in open access mode. And third one is those journals which are subscribed by the specific library. For example, let us my library collection. Click on my library collection. So nature biotechnology, these journals are subscribed by our library. It means access of these journals, we are directly subscribing these journals from publisher,
and SERA is not providing access to it. And the main feature here you will find the citation data of SGR. CRO journals ranking is this journal 22.781, H index is 491, NAS rating is 20. So this information is also available. If you click on it, click on any of the full text journal. It means it is available in print format. That in our library. Any other? So you can search the SERA resources from here. Then indiastate.com. This year we have discussed in continuity. India State. Because we are going to subscribe in near future. Okay, somehow it is discontinued, but we are going to subscribe in near future. Then this is very important, competitive examination preparation database. मेरा मोबाइल नंबर डाल के वो वाला पासवर्ड होगा नहीं होगा पूरा कहाँ पे डालना है लॉगिन करो कंपटीशन एग्जामिनेशन ये 12 बन 12 यही कॉलेज first here is the process of registration. Once you have to register it, we have two conditions here. Either you use your email with HAU domain, or you can register with the within the campus user. You can also send your request to in our library, and we can also arrange to provide the access of this 989660894. ईमेल आईडी नहीं इसमें कंटिन्यू ईमेल एड्रेस आपके वाली डाल नहीं आपने क्या किया है ये ऑनलाइन कंप्यूटर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करेंगे लिंक फॉर रजिस्टर ऊपर वाले मिनिमाइज करिए ना हाँ आ जाना है डिपार्टमेंट क्या बताया ऊपर लॉगिन लॉगिन This database contains more than 90 lakhs questions related to agriculture and allied sciences, and these questions can be used for JRF and other agricultural examinations. And you can design your question paper according to your need related to particular topic or related to particular examination. You can पासवर्ड डाल दिया टीचर स्टूडेंट होगा हो गया बैक So this is the main portal. Okay. This is go inside ICR exams, IUPPS, previous year papers, e-books, online English. These are some modules which are accessible. You can create your profile. Rewards, quiz is there, FAQs is there. ICR exams, you go inside. Here you find sample papers, my mock test. अभी आपका कोई है you can design your mock test here. For example, आपने डिजाइन किया कि 100 questions
मुझे पोटैटो पर करना है, और यू कैन पुट इट इन दिस डाटाबेस, वो सबको डिस्प्ले होगा, वो आपको इसमें रिव्यू वगैरह भी दिखाएगा। देन टर्म सेट पेपर, ये कोई सर्च टर्म डालिए, कुछ भी डाल दिए, पोटैटो डाल दिए, पोटैटो डालिए, पोटैटो पोटैटो या हॉर्टिकल्चर भी डाल सकते हैं। योर सर्च आइटम रन, ये क्या है, कंफ्यूजन टेस्ट, कंफ्यूजन करिए कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का आपने किया है और 45 मिनट्स कर दिया। स्टार्ट नाउ। अब ये 1 by 1 आपको क्वेश्चन डिस्प्ले करेगा, करिए कोई भी एक आंसर पर क्लिक कर दीजिए, देन सेव एंड प्रोसीड, सेव को भी किसी पर क्लिक कर दीजिएगा, सेव एंड प्रोसीड। ये टाइम लेफ्ट नहीं दिखाएगा, टेस्ट पॉज पर फिनिश कर दीजिए, मैंने जैसे 30 में से 2 किए, ओके फिनिश, प्रोसीड, व्यू एंड व्यू रिजल्ट। नीचे स्क्रॉल करिएगा, ये कितना था, टोटल क्वेश्चन थे 30, आउट ऑफ इसको आपको अटेम्प्ट करना 45 मिनट में। क्वेश्चन अटेम्प्ट 2, टाइम टेकन 1 मिनट, करेक्ट आंसर 2, रॉन्ग आंसर 0। फर्दर इसमें ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो ये दिखाएगा कि ये क्वेश्चन कितने लोगों ने इस डाटाबेस में अटेम्प्ट किया और कितने लोगों ने इसको सही किया और कितने लोगों ने गलत। तो यू विल बी एबल टू नो, मतलब आप अपने एनालिसिस कर पाएंगे कि आप 100 लोगों ने अटेम्प्ट किया, उसमें से यदि 10 लोगों ने सही किया, आपने गलत किया, तो यू आर अमंग दोस 90 पीपल, तो 70 पीपल, ठीक है ना, आप उन 10 में नहीं है। तो इस टाइप के एनालिटिक्स भी है। फिर इसमें मॉक एग्जाम्स जो दूसरे बच्चे डालते हैं वो भी आते रहते हैं, उनके रिजल्ट्स भी आते रहते हैं, और कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही अटेम्प्ट किया, वो सारा डाटा इसमें डिस्प्ले होता है। लाइब्रेरी सब्सक्राइब ऑनलाइन, ये these are the journals which are subscribed by the library up to 80 with free online access with print. Foreign journals भी हैं, Indian भी है, indiastate.com is not there. किसी इसको क्लिक कीजिए, जो किसी शिक्षा ई पोर्टल है, इसमें ICAR का जो अप्रूव करिकुलर है उसके हिसाब से बच्चों के लिए इसमें नहीं, ये दूसरा है किसी, ये बेसिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट जो कि इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में सभी इंफॉर्मेशन एक ही जगह आपको प्रदान करती है। क्या है, आपको यहाँ AICRP नेटवर्क प्रोजेक्ट कौन से हैं, यदि इस पर क्लिक करेंगे तो उस पर लिस्ट आएगी। फर्दर यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके डिटेल्स पे जाएंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए किसी पे, ये लिस्ट आ गई। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फर्दर उसकी साइट पे आप कनेक्ट हो जाएंगे। Then bioinformatics resources which are available in ICAR system, क्लिक कर देना, ये रिसोर्सेज हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर जाएंगे, क्योंकि एक ही साइट में हजारों साइट्स हैं, एक को खोल के देंगे। Prof specific knowledge resources are there, databases पे क्लिक करेंगे एक बार, डेटाबेस है, यदि एग्रीकल्चर रिसर्च डाटा बुक 2000 तक से अवेलेबल, 2002 से 22 तक अवेलेबल है बैक। सिमिलरली अदर डाटाबेसेस भी इसमें ये दिए हुए हैं,
आप देख सकते हैं, आपसे रिलेटेड जो भी है, यू कैन यूज दिस डाटा। Then genetic resources portal is there, experimental database portal is there, mobile app library is there. ICAR की जितनी भी मोबाइल ऐप्स हैं, so many apps are there, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर उन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ये हो गया मोबाइल ऐप गैलरी हो गई, कृषि विज्ञान केंद्र हो गए, यहाँ आपको सारा इंडिया के सारी यूनिवर्सिटी के कृषि विज्ञान केंद्र की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कृषि विज्ञान केंद्र होटल में आप उस पर जाते हैं, ये देखिए आपको ये जोन 1 जोन 2 उसके हिसाब से सारे की डिटेल आपको मैप भी मिलेगा। जोन 1 में कर दीजिए, क्या है हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब। जोन 2 देखा, जोन 2 में हरियाणा, ये देखिए हमारी यूनिवर्सिटी के कितने उनका डाटा भी अवेलेबल है। हमारा क्लिक कीजिए एक बार, ये भी वेबसाइट भी ये भी सुविधा आपको मिलेगी। नेक्स्ट पे जाइए, बंद करिए। Then daylight resources, we are subscribing. We are member of one more consortium, that is Delhi Library Network. So it is a network of more than 1,000 libraries. You can access the catalog of this union catalog of this network, and you can request your librarian to arrange the books on interlibrary world. In addition to this, we are also providing access to some important resources. You can access those resources from here also. Scope of database is a citation database. I think all of you are using this database for your research and publication purposes. Then English writing tool is no more available. Subsequently, we have HARYANA e-conference alerts is a general conference alert. Click कर देना। ये हटा नहीं आपको English writing tool। ये हटा दीजिए, तो हटा दीजिए, तो डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। ये conference alert। conference alert। It is just for to search the conferences. Online direct dictionary is there, multi-subject online dictionary is there. So these are all resources accessible to our user community. Back to the library portal page. You can search these e-resources from our library website using or the you can say mobile app, or you can use login password. इसमें होगा उसमें बाद में जब क्लिक करके डालना तो मैसेज मिलेगा, ईमेल पे होगा। मेल पे आ गया बताओ लॉगिन पहले CCSHAU ईमेल आईडी। हाँ आईडी पर गया ना ईमेल।
So all the resources through the library portal you can directly upload to the site of publisher. But this is a portal where you can say federated search to all the subscribed and accessible resources has been given to the user. So here you can say browse category. What do you want to search for? Agriculture, aquaculture, botany means subject wise. If you click on agriculture, in general, you will find list of the resources available here. You can read it. You have to check कौन सा है, किसका है, ऐसे बस. चलिए कोई बात नहीं. Then by publisher, ASCP books, Esther books. Otherwise, you can also search from there all publications. Click on all publications. You will find search in title, search in author, search in everything, all publication, articles, correction, ebooks, journals. So whatever you want to search, you can search from here itself. कोई भी ले लीजिए टाइटल, ebooks ले लीजिए और एग्रीकल्चर डाल दीजिए, हॉर्टिकल्चर डाल दीजिए. Horticulture, HORTI. They are edited. तो all publication area, ebooks के. तो horticulture की सारी बुक्स इसमें आ गई. क्लिक करें. So this book is available to you. Similarly, you can access journals also. Click on search again. Ebooks journals लीजिए. E-journal. इसमें डाल दीजिए आप कौन सा नेचर. ठीक है. So nature of natural history, these are the journals which are available here. You can select your desired one. So you can read it. If you click on it, read the page. ये जर्नल आपका यहाँ डिस्प्ले हो गया है. ये मैंने इसको व्हाटएवर कंटेंट्स में भी दिया है. ये वॉल्यूम 4 नंबर 2 21. So you will find if it is subscribed or access of this journal, particular journal has been provided to us, you will be able to see full text here.
बैक करती है, और पब्लिकेशंस में देखती है, इसमें your reading, expert talk, news, thesis, videos, everything is there, e-books, बैक करती है, होम करती है, ब्राउज के बाद ब्राउज बाय मीडिया, e-books आप देखना चाहते हैं, रिमोट एक्सेस डेटाबेस देखना चाहते हैं, कॉन्टेंट प्रोसीडिंग, you can select any of them. Then A to Z listing is there. It means all resources listed. You will find a list of all the resources, including journals, books, libraries. Then collections are there. Then news, headlines, explore more options are there. So you can use this platform. You can download a mobile app on your mobile, and you will get free access or open access or on your mobile. So it's all about the accessibility of our resources. So any questions so far? So thank you very much. इसका माइक तो नहीं रखो, इसके बाद माइक ऑन ही कर दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेशेंस के लिए जो आपने रखा और हमने सुना। आई होप कि आपने कुछ तो यहाँ से अचीव किया होगा। Was it useful for all of you? Okay, then the purpose of this conference is now technical session 2 यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो वर्कशॉप्स हैं हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं इन फ्यूचर। ठीक है, आपका फीडबैक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग देखेंगे। आप लोग चाहते हैं ऐसी कॉन्फ्रेंस ऐसी वर्कशॉप्स को आगे? थैंक यू। तो यहाँ पे हम टेक्निकल सेशन 2 के साथ ही इस वर्कशॉप को का कंक्लूड करते हैं और होप करते हैं कि आप जितने भी रिसोर्सेज बताए गए हैं उन सभी का आप प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे अपने अकेडमिक्स में। जो यहाँ यूजफुल कंटेंट बताए गए हैं उनका आप उपयोग करेंगे, अच्छे से आर्टिकल यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने बताया प्रॉपर साइटेशंस का यूज़ करेंगे, प्लेजरिज्म भी यूज़ करेंगे। तो आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी कोई आपको क्वेरी है तो लाइब्रेरी में आप आ सकते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ सकते हैं, या R&D सेक्शन में R&D सेक्शन में आप आ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आपके सर्टिफिकेट्स आपको आपकी ईमेल हमने नोट करवाई है, वहाँ से भेज दिए जाएंगे। और दो शब्द में डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं ICAR-I में, जो विदुर से यहाँ पे नॉलेज शेयर करने हमारे बीच में आए हैं, वो उनको दो शब्द कहने के लिए मैं आमंत्रित करें, बस उसके बाद हम ऑर्डर करते हैं। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सबसे यही कहूँगा, मेरा आपसे एक अनुरोध है, मुझे मेरे गुरु ने बताया अगर आप अच्छे टीचर और अच्छे स्कॉलर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट एटलीस्ट 1 आवर डे इन लाइब्रेरी, तो मेरा ये भी आपसे अनुरोध होगा कि 1 घंटा कम से कम डेली लाइब्रेरी में जुड़ेंगे और रीडिंग हैबिट रीडिंग हैबिट एक है, कोई भी डिजिटल वर्क की चीजें हो, रीडिंग हैबिट के मुताबिक चीजें। अगर आपके पास रीडिंग हैबिट जनरेट हो गई, you will get a good vocabulary. If you get a good vocabulary, you will get a good ideas. You will get a good ideas. You can dictate the work. So you should be a good reader as well as listener. जितना सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑर्गेनाइजर डॉक्टर पटेरिया, सीमा मैडम, डॉक्टर प्रणाम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये मंच हम सबको प्रोवाइड किया, जिससे हमारे अपना जो भी थोड़ा बहुत हमने काम किया
मानसू का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर जो मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी उसको सबको लाइक किया और हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कुछ बताया उसको अपने डेली लाइफ में यूज करें सो दैट साइबर सिक्योरिटी और इससे थ्रेट से हम कुछ हद तक कंट्रोल हो सके। अदरवाइज ये लाइफ हम वर्चुअल वर्ल्ड में कहीं लिमिट नहीं है, इट इज स्काई का है नो लिमिट, लाइक ए डिजिटल वर्ल्ड है नो लिमिट। तो कब क्या होता है, लेकिन हमारे अपने अवेयरनेस हमें कुछ हद तक उससे बचा कर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत